Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The IELTS King. My name is Harshit Mantri. In today's video, I'm going to cover a particular cue card. Describe an area or subject of science that you are interested in knowing more about or you want to learn more about. तो आपको साइंस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एरिया देखना है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो जिसके बारे में आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना है. अब नॉर्मली एज आई एम ऑल्सो नॉट अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, माई बैकग्राउंड वॉज कॉमर्स, सो आप ऐसा कुछ लीजिए इस टॉपिक के अंदर जो कि आपके लिए बोलना इजी हो. तो आई एम गोइंग टू कवर समथिंग रिलेटेड टू रोबोटिक्स. और उसके अंदर मैंने कहाँ से मुझे रोबोटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आया, कोई मूवी देख के आया, मैंने रोबोटिक्स के बारे में क्या पढ़ा है, दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू कवर in this video. So let's listen me out for 2 minutes how you can speak on this cue card. So around a year ago, I had watched a movie of Rajnikant, who is known as the South Indian superstar, the biggest actor in the movie industry. So I saw that movie and it was about robot. The name of the movie was Robot 2.0, and in this movie it was shown that how a character of a robot is portrayed by Rajnikant and how he was doing a lot of stuff that is even hard to imagine for a normal human brain. From then, I started gaining interest into this particular area of robotics, and I understood that this is the future of the whole world. I started gaining more interest and got to know by a lot of articles that in Japan there is a restaurant where presently there are all the staff is completely robot. There is no human staff. So even the dishes are prepared and clean and even served by the robots. So that is so fascinating. Apart from that, there was a recent article which was published that in a restaurant in China, all the robots are operating. If you need to book a room, you just need to talk to robot and you are served by robots. So everything is being handled by the robot. So considering all this three examples, I can say that robots will be ubiquitous part of our day-to-day life. We would not, be seeing humans anymore working in certain industries, but robots will take over. They are going to help us, obviously. They are going to help in space exploration. They are going to help us in our day-to-day life. Apart from that, there will be in the factories also, there will be robots which will make our work easy with automation. In medical field, robots will be performing surgeries. So, robots will be really very useful in the future, especially in this particular areas. Robots are already used in healthcare sector. I am currently living in Nadiyad city, and there is a hospital named Kidney Hospital where robots are operating on the kidney patients. So, I think this is the area which I want to learn more and more about. I want to know more about. So, this area is robotics. So, guys, I hope आपने 2 मिनट अच्छे से सुना होगा. You must have taken certain points. अब इस पे मैंने टेक्निकल ज्यादा पॉइंट्स नहीं रखे. मैंने कुछ डे टू डे के एग्जांपल्स दिए, जैसे जापान में यूज होता है, उसके बाद चाइना में कैसे यूज होता है, एक हॉस्पिटल नडियाद में वहां पे कैसे यूज होता है, और उसके ऑपरेशंस क्या क्या इन फ्यूचर कौन से एरिया में आप इसको यूज कर सकते हो. अगर आप इसको टेक्निकल बनाना चाहते हो तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जा सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉइंट आप इसके अंदर ले सकते हो. देन यू कैन इवन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो. पर उसके लिए आप थोड़ा अच्छे से उसको समझ के फिर इंटीग्रेट करना. अदरवाइज यू कैन यूज द आइडिया दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.